Hi, dear students. Hope that you all are feeling well. Today we will discuss about the entitled theme Educational Implications of SR or Trial and Error Theory of Learning. As we know that educational implication simply means when we use the laws and principles of learning in the field of education in order to make it productive and result oriented. Dear students, actually main purpose is to make the teaching learning process effective and result oriented. That is why we use various principles and laws of learning in the field of teaching and learning. There are various educational implications of the theory which is known as connectionism theory or trial and error theory. The major educational implications of the theory are entitled as under. Number 1, importance of readiness. Dear students, as we know that motivation is being called the heart of learning. It means no learning will take place without the motivation. That is why teacher has to always keep it in the mind, the motivation among the learners. अगर learners motivated नहीं है तो learning नहीं हो सकती है. It is responsibility of the teacher to inculcate the motivation in the learners. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक टास्क परफॉर्म एक इंडिविजुअल या लर्नर नहीं कर सकता है ओनली ऑन द बेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोफाइल. अगर किसी का कॉग्निटिव प्रोफाइल हाईली डेवलप्ड है, आई मीन टू से यू किसी की ब्रेन कैपेसिटीज हाईली डेवलप्ड है, लेकिन उस काम को करने के लिए एक इंडिविजुअल में अर्ज नहीं है, डिजायर नहीं है, तो वो इंडिविजुअल उस काम को नहीं कर सकता है. बिकॉज एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मोटिवेशन इज बीइंग कॉल्ड द हार्ट ऑफ लर्निंग. That is why it is rightly quoted, we can drag the horse onto the shore but not motivate to drink. It means there is no compulsion in the learning. The organism must and ought to be intrinsically motivated, otherwise there is no possibility of the learning. तो इसीलिए हर एक टीचर के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिफोर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स द टीचर हैज टू डेवलप द अर्ज, मोटिवेशन, डिजायर टू लर्न. अगर लर्नर्स में अर्ज डेवलप नहीं हो गई, मोटिवेशन डेवलप नहीं हो गई, इट मीन्स देयर इज कंप्लीट फेलियर of the whole teaching learning process. If we want to make the teaching learning process effective, productive and goal oriented, the teacher must have to focus onto the motivation of different learners. It is the curiosity, it is the urge which motivates to the learners to get the knowledge, to develop the skill competency. हर एक स्किल सीखने के लिए एक लर्नर के पास अर्ज होनी चाहिए, उसके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हम मोटिवेशन के बगैर नहीं कर सकते हैं. चाहे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है, लेकिन बच्चों में मैथमेटिक्स सीखने की अर्ज होनी चाहिए, उनका बिहेवियर रेडी होना चाहिए कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के लिए. अगर कोई टीचर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है,
सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता है या लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाता है, हर हाल में वट एवर द टीचर इज टीचिंग, हर एक सब्जेक्ट को सीखने के लिए, नॉलेज उसकी गेन करने के लिए, तो एक लर्नर के पास मोटिवेशन जरूरी होनी चाहिए. सो इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर टू डेवलप द मोटिवेशन, और वी कैन से दैट क्यूरियोसिटी among the learners. Otherwise, there is utter failure of whole teaching and learning process. अब यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाने की ही बात नहीं है, कोई डिस्कोर्स पढ़ाने की बात नहीं है, आई मीन टू से यू कंटेंट डिलीवरी की ही बात नहीं है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक or give the due importance to the motivation in every aspect of the education. For example, जहाँ तक कि कोर्स सिलेक्शन का सवाल है या स्ट्रीम सिलेक्शन का सवाल है, हम कंपेल बच्चे को नहीं कर सकते हैं कि आप मेडिसिन पढ़ो, किसी बच्चे को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप आर्ट्स फील्ड ले लो, या किसी बच्चे को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आप इंजीनियरिंग के लिए जाओ. वी हैव टू एक्चुअली गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ द लर्नर. साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव competencies, इंडिविजुअल्स अर्ज टू लर्न, इंडिविजुअल्स डिजायर टू लर्न. क्या वाकई लर्नर जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, मेडिसिन पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, इंजीनियरिंग में उसकी मोटिवेशन बनती है कि नहीं? इट मीन्स पेरेंट शुड नॉट डिसाइड, और एनी अदर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट डिसाइड व्हाट द सब्जेक्ट और द स्ट्रीम शुड बी selected for the learner. As per the aim of education is concerned, education is treated as a child-centered rather than the society-centered. It means we have to give due importance to the urge, desire and will of the learner as well. Otherwise, there is complete failure of the whole teaching learning process. इसीलिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है. अगर हम नॉर्वे की बात लेंगे या फिनलैंड और स्वीडन की बात लेंगे तो ये वो कंट्रीज है जिनका एजुकेशन सिस्टम वेरी मच साउंड और डेवलप्ड है. एंड वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस इज सिंस फ्रॉम द अर्ली एज दे ट्राई टू नो और evaluate the total persona of every learner, especially in terms of attitude, in terms of aptitude, in terms of sentiments, desires, wills, wishes. That is why these countries conduct the various psychological tests, चाहे वो IQ टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, एस्पिरेशन टेस्ट है, मोटिवेशन टेस्ट है या और कोई टेस्ट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट्स दे आइडेंटिफाई द कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर. They know the interests and desires of the learner. Accordingly, they channelize the capacities and capability of each learner as per their whole personality profile. यानी कि उनका बच्चा जो सिस्टम में होता है वो बाय चॉइस होता है, बिकॉज सिलेक्शन इज प्योरली साइंटिफिक. लेकिन जो हमारा लर्नर जो होता है वो सिस्टम में बाय चांस होता है. और हमारी कंट्री में यहाँ पर 20 साल के बाद लर्नर को पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए. मुझे म्यूजिक में जाना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, मेडिसिन में जाना चाहिए, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए. एंड इन नटशेल वी कैन से दैट व्हाइल selecting the learner for any course or any stream or any field, we have to give due importance to the motivation. Because as we already mentioned, no learning is possible without the motivation. Every learning starts from the motivation.